Assalamu alaikum students. Today we are going to learn a very important topic, and that is the steps in the process of reproduction. And this video is meant for the students of class 8 as well as the students of class 10th. Let's first study what are the steps that take place in the process of reproduction. It generally comprises of fertilization and development of embryo. Let's first come to the fertilization. देखते हैं कि fertilization how it took place, कैसे होती है ये fertilization. Here I have drawn the female reproductive system. देख सकते हैं आप female reproductive system. As you know, the parts of the female reproductive system, that is the female reproductive organs, it comprises of ovary, fallopian duct, it comprises of uterus, and it comprises of cervix, vagina. Here you can see कि आप देख रहे हैं कि the sperms they enter through vagina, and these sperms they swim through uterus and go into the oviducts. यहाँ पर through uterus it goes into the oviduct, that is the fallopian tube. After every month ovary it releases a one mature egg, और ये mature egg release करता है oviduct में. यहाँ से स्पर्म्स आते हैं और यहाँ से एग जो है वो ओवरी रिलीज़ करती है. एंड इन दिस ओविडक्ट द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म इट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. I'll write here. Nucleus of sperm fuses with the nucleus of an egg cell to form a single nucleus. And this fusion of sperm with the egg, we call it as fertilization. इसी को हम fertilization कहते हैं. And resultant cell, that is a single nucleus that is formed by the fusion of the sperm and the egg, that we call as zygote. उसको हम zygote कहते हैं. जो सिंगल सेल बनती है स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद, that we call as zygote. So the single cell that results in the formation of a single nucleus, that we call as zygote or fertilized cell. Okay, so the fertilization it takes place in the oviduct, या इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. ये ओविडक्ट में फैलोपियन ट्यूब में, या ओविडक्ट का दूसरा नाम ही फैलोपियन ट्यूब है. सो द फर्टिलाइजेशन इट हैपन्स इन द ओविडक्ट. उसके बाद आ जाता है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो रिजल्टेंट सेल है दैट वी कॉल्ड एज ज़ाइगोट. ये ज़ाइगोट जो है इट डिवाइड्स रिपीटेडली. ज़ाइगोट it divides repeatedly to make a ball of hundreds of cells that we call as embryo. उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. ये जो एम्ब्रियो है इट मूव्स डाउन द ओविडक्ट. ये ओविडक्ट से निकलकर फिर कहाँ पर आ जाता है? यूट्रस में. आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जब बनती है ज़ाइगोट, गो एक मास ऑफ सेल्स बनाने तथ तो तम पतन ओविडक्ट मज नेरान यह मास ऑफ सेल दैट वी कॉल एज एम्ब्रियो. तम पे गसान ये यूट्रसस मज. गो यत यूट्रसस मज यवान ये मास ऑफ सेल्स. ओके,
So embryo, that means the embryo, it gets embedded into the soft and thick lining of the uterus, and when this embryo, when it moves into to the new uterus, it will be called as implantation. इसको हम implantation कहते हैं, ठीक है. And when this embryo, it settles down into the uterus, जब यूट्रस में सेटल डाउन हो जाता है तो हम कहते हैं that the woman is said to have become pregnant. So what is an embryo? Embryo होता क्या है? What's embryo? अगर हम simple definition इसके लिए embryo की, so embryo, it is an early stage in a developing baby. Early stage in a developing baby. Thus, an unborn baby at an early stage of development in the uterus, it is called as an embryo. So in the this unborn baby, it remains an embryo in the first 8 weeks of pregnancy. यानी कि फर्स्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में तब इसके जो बॉडी फीचर्स हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं. बॉडी फीचर्स मीन्स हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, दे आर नॉट आइडेंटिफाइड एट एन एम्ब्रियो स्टेज. एम्ब्रियो स्टेज में जो बॉडी फीचर्स होते हैं अनडिफाइंड. उसके बाद जो ये एम्ब्रियो है, इट ग्रेजुअली इट डेवलप्स बॉडी पार्ट्स. स्लोली इट डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, legs, etc. Okay, so an unborn baby in the uterus at the stage when all the body parts can be, जब हम पूरे body parts को हम identify कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं fetus. एम्ब्रियो स्टेज में हम बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है यूटरस में, देन वी कैन उसके बाद इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं. वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई देम एट दिस स्टेज. इसको हम एम्ब्रियो नहीं, इसको हम फीटस कहते हैं. सो इसको 38 वीक्स, इट टेक्स अबाउट 38 वीक्स, दैट मीन्स 9 months from the fertilization of egg to the formation of fully developed. So it takes 9 months fertilization से up to the fetus. इसमें 9 महीने लग जाते हैं. And after 9 months there is the delivery of a fully developed baby जिसको हम कहते हैं. That's all. Thank you.